We're inviting you to UT's head office and we will get in more details of things. The idea today is to give you a bird's eye view. You have enrolled with us for 2020, 24-25. So आपने जब enrollment किया, it has been some time now, so we want you to get a brief idea of ये पूरा program कैसा दिख रहा है. We are starting with things at UT. So I think I'm done with all my basic announcements. Anwar sir, I'll hand it over to you at Kharghar head office. Good morning, sir. Good morning, Manishji. I'll need your help if you could run the PPT. If you can open the PPT from your end and give me. You want me to share PPT right now? हाँ, मतलब वो चालू करके रख लीजिएगा. I think it's all on, sir. जी. It's tested and on. Okay. People who are coming in for physical also over here. So it will take us about. So guys, students and parents, a very warm good morning to all of you. So this is the new reality. We at UT operate in this way where we have sessions happening, live sessions, and people joining us virtually. So आप जो इधर देख रहे हैं, this is how the classes are also being conducted. And मैं आपको वो दिखाऊंगा. So आज का एक agenda है. So there are about कितने participants who have chosen to come. About 46 parents have chosen to come virtually, and remaining have chosen to come physically. This is how we have been conducting sessions. So now this is. I hope online wale parents are all able to hear me and my voice is clear. So yes, sir. So sir, I would, if you could now start your PPT and would start. So we will be using a PowerPoint presentation. Myself and my colleague Manish, we will be taking this PPT and it would take us about 40 minutes to, and it will have audio, video presentations. Correct. So I think so Manish ji, we are all fine. मैं just आपसे access request करता हूँ. Yes, sir. So online parents and physical parents, let's start with this pre-welcome. This is myself, Anubhav Sinhal, and Manish Saraf. Now we normally do this pre-welcome in the month of January, February. The primary idea of this is to give you an idea of when are we starting our classes, so that अगर किसी को कोई travel bookings करनी है, now not exact dates, लेकिन roughly काफी ढंग की dates दे देंगे आप. And आपके कुछ questions होंगे तो वो answer करेंगे. And जैसे सर ने बोला, we will also be doing a formal welcome session before we actually begin the presentation, begin the program. So let's go through the agenda. Sir, अगर आप मेरे को वो co-host से हटा दें, so that I'll not get these notifications. Nilesh sir. Nilesh sir. Yes, I'm doing that. Okay, thank you, Nilesh sir. Chaliye. So we welcome you all at Universal Tutorials. Sorry to interrupt, Anubhav sir. You have joined from you have joined as a host. So by default, you are a co-host. I cannot remove you as a co-host. What do I do to? You need to join from some other ID. चलो ठीक है. तो आप बस सर जैसे जैसे जो आते जाए तो उनको एडमिट करते जाइएगा तो we'll reduce that sir. Yeah. I'll just make the sound off when someone joins or leaves. चलिए ठीक है sir. Thank you Nilesh sir. चलिए. So I welcome you all at Universal Tutorials. Let me tell you जो आपने join करा है, that is the most powerful program in Navi Mumbai. It is the choice of toppers of Navi Mumbai. ये वो program है
जो मोस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर बोर्ड्स प्लस फाउंडेशन, we at Universal Tutorials have completed 25 years और मैं इस business में हूँ since 1998 after I did my MBA engineering from BITS Pilani and MBA from Penn State, and after working for some time with Bank of America and Mukesh Ambani साहब, I decided नहीं, मेरे को ये भाषण देने में ज्यादा मजा आता है, बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, तो जब से इस फील्ड में आया हूँ, so I enjoy doing this, and me and my team we've completed 25 successful years. और पिछले कुछ 7-8 सालों से एक बड़ा अजीब सा कंपटीशन फेस कर रहा हूं इस बिजनेस में. कौन सा कंपटीशन? दैट देयर विल बी अ क्लास व्हिच वुड कम अप 2 साल, एंड दैट हैज हैपेंड एट ऑल लेवल्स, छोटी क्लास के लेवल पे, बड़ी क्लास के लेवल. बट आई एम प्राउड इनफ टू से दैट यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स हैज सर्वाइव्ड ऑल दोस चैलेंजेस एंड कंपटीशन. इट स्टार्टेड विद स्मॉल क्लासेस कमिंग अप, एंड वो लोग कुछ अनाउंस करेंगे and फिर admission they will not be able to do a good job. IIT classes करेंगी, IIT classes आके कहेंगे कि हम बच्चे को 8th 9th 10th में पढ़ाएंगे. They would not know how to teach board exams. Board exams is a completely different ball game altogether. और बच्चा वहां frustrated हो जाएगा, मालूम पड़ेगा वो पढ़ ही नहीं पा रहा. Then there will be people who would come run by the meal, जैसे बायजूस, बहुत सारा पैसा लेके, and they would undercut us. And people have been we've been labeled that we charge money. I have to charge a good money to survive myself, or else I'll not be able to survive. There are people who are doing this entire thing for a paltry sum of 25, 30, 40,000 rupees. और फिर वो तो बस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, हम जैसों को परेशान करते हैं. But I would say with the blessings of my elders and largely my father, जिन्होंने, मैं फाइनेंस पढ़ के आया था, लेकिन मैं मेरे पिताजी को कहता था we should not invest in buying a place in a business. फाइनेंस की टेक्स्ट बुक नॉलेज कहती है जगह मत खरीदो, इन्वेस्ट इन बिजनेस. बट पापा बोलते थे नहीं, जगह खरीद, अपनी खुद की जगह पे काम कर. वी आर मारवाड़ी पीपल, जब तक अपनी जगह नहीं होगी काम नहीं होगा. Believe me, all places are bought by Universal Tutorials, and that became so true in COVID. That's why we survived COVID, and that's why we are. This entire thing is because we have gone the traditional route where everything is bought by us. That's why we've survived, and we are able to offer quality to everyone. So you've joined the most effective program for boards जो आपने join किया है, and it is being delivered for 25 years. So having said this, let me now tell you what would be the agenda for today. Agenda for today is we will talk about Universal Tutorials. We'll talk about UT program 24-25 का एक छोटा सा आपको glimpse देंगे. We'll tell you that how we believe in we make careers, में कैसे हम believe करते हैं. UT results, and then we'll throw the house open for question and answers. Chaliye, let's start about Universal Tutorials. As I said, Universal Tutorials was started by me. We completed 25 years on 14 December 1998. We've coached in our journey, we've coached more than 35,000 plus students. So that's a huge, humongous number. और कई जगह बच्चे टकरा जाते हैं, and that is so nice to have these students. 6 branches of Navi Mumbai में, plus the COVID taught us we are pan India, and we are doing online test series. Students are joining us right from North Delhi से लेकर नीचे चेन्नई तक, West में अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक बच्चे आ रहे हैं. We have students from US, we have students from UK joining us for study abroad programs. So we have a pan India presence. Areas UT focuses on. The 3 broad areas UT focuses on is board exams, which is our staple business, CBSE and ICSE. That's what we focus on, and that's what is this today's talk all about. Then the other areas we focus on is Indian exams. We also do IIT NEET. Now we do it through our partners. IIT NEET we do it through Champion Academy. जिनका नीचे हमने junior college set up किया है. आप जो खारगर में आए हैं, नीचे जाएंगे, first floor पे we have our dedicated junior college with all lab facilities. Our students are doing extremely well. Then we also do non-engineering and non-medical
careers like IPM, Integrated Program in Management, sending students for 5-year IIM Indore. This year there are 2 students who've gone to IIM Indore. Then we have CA Foundation programs. Then we have CLAT programs. Students getting into NLU. Students getting All India rank 5 in CLAT. Anmol Dhawan getting an LLU Delhi. So those kinds of programs, non-engineering, non-medical programs are also being offered. And then the fastest growing division is the study abroad going division. जहाँ पे हम SAT, GRE, IELTS, TOEFL पढ़ाते हैं, and kids go instead of pursuing education here in India after 12th, they go abroad after the standard 12th or masters के लिए 12th बाहर जाते हैं. So this is now we've been able to bring first Ivy League admission to Navi Mumbai. Last year our student went to Cornell. We have students going to UPenn, students going to Harvard from our institute. So that's the kind of thing which you have joined at Universal Tutorials. Now that was about Universal Tutorials. Now let's come to the thing जिसको आप सुनने आए हैं 2024-25 program के बारे में. So I think इसमें मैं क्या बात करूंगा? I'll be talking about start date. मैं कब चालू करने की सोच रहा हूँ? Subject flexibility क्या मिलेगी? क्या टाइमलाइंस रहेंगी आपके बच्चे की? और कुछ अनाउंसमेंट्स. अभी मोदी सरकार के लास्ट पिछले 10 दिन में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आए. So we'll be talking about those announcements, how it affects you, how it affects UT. So वो सब announcements के बारे में बात करूंगा. So talking about it, सबसे पहले start date पे बात करें. So people who are here for 10th CBSE and 10th ICSE, I am proposing 2 start dates. These 2 start dates are either 17th March 2024 or 31st March 2024. अगर आप calendars देखेंगे तो ये दोनों दिन Sundays. Now, depending upon your school, अब आपका school कैसे announce करता है? Because ये थोड़ी सी fluid situation है, election year है, so not many schools have released this calendar as yet. इसकी वजह से ये वाला ऐसी dates announce करी है. अगर school announce करता है कि 1st April से school चालू हो रहा है, तो we will do welcome session on 31st March, Sunday, and start classes from 1st April. अगर school announce करता है कि नहीं, एग्जाम अभी 10-11 मार्च तक सब खत्म हो जाएंगे एंड 15 मार्च से स्कूल्स चालू हैं, then we would do welcome on 17th of March and start classes from 18th onwards. अब ये closer to the date we will announce. जैसे जैसे स्कूल्स के कैलेंडर हमको मिलते हैं. अभी स्कूल्स के कैलेंडर हमको मिले नहीं, but not इनके अलावा नहीं होगा. So either this. Madam, I am waiting for everybody. Then I will. There is a school which is already has announced and उसने बहुत जल्दी announce किया है Gold Crest. अगर यहाँ पे कोई Gold Crest के बच्चे हैं which are from वाशी, उनके लिए एक बैच हमारा 19th February से चालू हो रहा है. That is at वाशी चालू हो रहा है. So this is only because उनका schedule announce हो गया है, तो उनके लिए हमने पहले से announce आज कर सकते हैं तो कर दें. But remaining everybody का probably this would be the proposed schedule depending upon how it would be. ये आपको closer to the date मालूम पड़ेगा. Initially सिर्फ maths and science की classes होंगी up to 7th April and उसके बाद all subjects would begin from 8th April onwards. So ये हो गया start date के बारे में to give you an idea. अगर आपका बच्चा 9th CBSE 9th ICSE में ज्वाइन कर रहा है, this is for 10th CBSE and 10th ICSE. अगर आपका बच्चा 9th CBSE 9th ICSE में ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए how the schedule is, उनके लिए we are not hurrying. उनकी date is 31st of March. There is no 2 proposal dates. We are only beginning from 31st of March. Welcome on 31st of March and classes resume on 1st of April. Initially maths and science up to 7th of April and all subjects will begin from 8th of April. This is how would be for 9th and 9th CBSE and 9th ICSE. I hope this is clear. Moving on. Summer vacation. Summer vacation. This is the 9th ICSE, 10th ICSE, 10th CBSE, no summer vacation. We will be operating in summer vacation. So आपके लिए कोई summer vacation नहीं है. So when your school will be in summer vacation for 4 weeks, 1st of May से लेकर 31st of May तक, उस time पे you will have classes at UT. So no summer vacation. But 9th CBSE को एक summer vacation मिलेगा. अगर कोई बच्चा 9th CBSE के लिए ज्वाइन कर रहा है, 2nd May to 15th May will be a summer vacation.
there will be no UT classes for 9th CBS. अगर कोई बच्चा उसमें join हो, you could book your tickets and plan it accordingly. So this is for summer vacation. आगे बढ़ते हैं. Subject flexibility. We at UT offer this complete subject flexibility. ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है कि आपको हमारे पास कंपल्सरीली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने. आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहें वो आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. सो दीज आर सब्जेक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल. मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, इकोनॉमिक्स, कमर्शियल एप्लीकेशन, ये सब ICSE में है. इकोनॉमिक्स, कमर्शियल एप्लीकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं. And depending upon how many subjects you pick up, suppose you pick up maths, you'll be coming to classes for 3 days a week. If you pick up science, then 3 days a week, 2 hours per day. So maths and science would be 3 days a week. If you pick up social, 1 day week add ho jayega, so it will become 4 days a week. English, 1 more day will add up, 6 days a week. Hindi, Sanskrit, एक और दिन add हो जाएगा. ऐसे दिन add होंगे, and this is how your days will be. अब आपको decide करना है आपको कितनी जरूरत है. पॉपुलरली बच्चे क्या लेते हैं? पॉपुलर इज 4 सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, सोशल. कोई इंग्लिश लेता है, कोई हिंदी लेता है. सपोज कोई हिंदी भाषी है तो वो शायद हिंदी नहीं लेता है, कोई इंग्लिश लेता है. कोई साउथ इंडिया से है तो ही सेज कि उसका इंग्लिश स्ट्रांग है, ही वांट्स टू पिक अप हिंदी, संस्कृत, तो वो हिंदी, संस्कृत पिक करता है. पॉपुलर इज दे स्पेंड टाइम फॉर 4 सब्जेक्ट्स. अब जो आप सब्जेक्ट नहीं पिक करते हो उस सब्जेक्ट का वी एट यूनिवर्सल ऑफर अ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम. दैट्स अ वेरी बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन है कि भाई मैंने हिंदी अपने आप करने का सोचा है या मैंने सोशल अपने आप करने का सोचा है, तो उसके मैं टेस्ट्स लिखता जाऊं. तो आप मम्मी से पढ़ रहे हो या पापा से पढ़ रहे हो या एक ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो, अब वो लोग टेस्ट नहीं कंडक्ट करता, तो वी विल कंडक्ट टेस्ट. अब टेस्ट में वी बिकम फैंटास्टिकली वेरी पावरफुल. ये टेस्ट सीरीज हम पिछले 20 साल से 25 साल से दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, एंड इट हैज इवॉल्व्ड सो ब्यूटीफुली दैट टुडे द टेस्ट सीरीज कुड बी. पहले होता था कि भाई आप फिजिकली सेंटर पे आओ, अभी भी वो ऑप्शन सारे अवेलेबल है, बट टेस्ट सीरीज हाउ टू वर्क इज वी विल थ्रो इट ओपन ऑन 1st of May. सारे चैप्टर्स वाइज तोड़ देंगे. सपोज मैथ्स में 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर के टेस्ट होंगे, पूरा स्केड्यूल होएगा, और इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ चैप्टर टेस्ट एंड विल बी कंसिस्टिंग ऑफ मॉक टेस्ट्स. अब आपकी मर्जी है, आपकी टीचर ने, आपके मम्मी ने, आपके पापा ने आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई, तो आप इस संडे को ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लिखना चाहते हो, राइट ट्रिग्नोमेट्री. अब आपको मर्जी है, नहीं मेरे को यूटी के में आके लिखना है तो आके लिखो. आपको नहीं मैं घर से लिखना चाहता हूं, वी हैव अ उड़ान प्लेटफॉर्म, उस पे ऑनलाइन हम ऑनलाइन ही करेक्ट करके आपको देंगे. सब्जेक्टिव करेक्शन होगा, टीचर उस पे एलोकेट करके देंगे. सो वी हैव अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म. सो जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप अपने आप पढ़ना चाहते हो, आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, pick a test series for that. That's the subject options. Plus you also can pick any combination online or classroom. अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने बोला मैं क्लासरूम आ रहा हूं, फिर 2 दिन बाद बोलो आज मैं क्लास फिजिकल नहीं अटेंड करूंगा, मैं क्लास ऑनलाइन अटेंड करूंगा. नो, दैट्स नॉट. Either you decide completely online or you decide completely offline. So that's how the options are. अब कई बच्चे इसमें हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट्स में कि भाई वो वाले सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन ले लेते हैं, मैथ्स एंड साइंस ऑफलाइन लेंगे, और वो वाली क्लासरूम्स ऑनलाइन लेंगे. हिंदी इंग्लिश वाली सब्जेक्ट्स की आप कर सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ये कॉम्बिनेशंस आप, अगर आपने कोई प्रेजेंट कॉम्बिनेशन किया है, राइट अप टू द स्टार्ट ऑफ द क्लास तक आप उस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हो. सो दैट्स हाउ वी अलाउ इट. बट are we gung-ho about physical? We are absolutely gung-ho about physical. और ऑनलाइन का जो आप ये इधर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा. मैं अभी आपको एक मेरा बोर्ड भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको वो बोर्ड करके मिलेगा. इनफैक्ट मनीष सर, shall I show that board option right away itself? जी सर, लेट्स डू इट सर. ये स्टॉप शेयर कर दीजिए. हाँ, तो मैं करूंगा कि आप करिए. मैं करता हूं. आई विल डू इट सर. होल्ड ऑन. हाँ सर. So, you know, I would like to show you how we at Universal Tutorials operate in this. So, क्या हुआ सर ये? नहीं, आप कैमरा आपको एडवांस में सिलेक्ट.
सर आई थिंक वो कैमरा हैंग नहीं हुआ है ऊपर. Yes. हाँ. Thank you. So this is our jugaad which our team has created. प्रदीप उसको घुमा के लगाना, वो शायद उस तरफ फेस हो रहा है उसका. So we've done this beautiful technology का हमने एक option create किया है, and we want to give you a demo of this, which is on. Hello. Manish sir, the screen is frozen. Is it just for me or is it for everybody? No, I guess this is for every one of us. Noted, sir. Noted. So we'll resume, sir. Just a second. I think there's some issue. They are switching the camera. We'll be back online. Just a second. Hello. Yes, sir. Video is off, sir. उसका cover नहीं हटाया है क्या? हाँ, जी. एक सेकेंड सर, एक सेकेंड. Unmute करिएगा सर प्लीज. Sir, can you hear us? Yes, sir. So, parents, this is how it looks to an online parent. And what we've done is the beautiful part of this entire thing is professors are like me, जो टेक्नोलॉजी समझते हैं, बट अगर बोला जाए कि वो पेन वेन पे वैसे वाले पे लिखना है तो वो शायद नेचुरल प्रोफेसर नहीं रहते. सो वी क्रिएटेड इट दिस वे कि UT pre-welcome. So the professor would be in his natural self, writing it on the board. यहाँ पे एक physical class बैठी हुई है. There is an online audience which is there, जिसको मैं यहाँ पे इस screen में यहाँ पे देख रहा हूँ. So for me, it is some students sitting physically, some students sitting online. और मैं उनको जैसे वो मेरा स्टूडेंट है मनीष सर, मैं उनको बोल सकता हूँ नीचे मत देखिए मनीष सर, सीधे मेरे को सामने देखिए. सो आई कैन, उनको डांटना है बच्चों को, उनको वो करना है, वो सब कर सकता हूँ. इट्स अ एग्जैक्टली फिजिकल एक्सपीरियंस. और सर को मेरा ये बोर्ड मेरी हैंडराइटिंग में विजिबल है इन हिज डिवाइस. So this is how UT works in a live session. There's a professor who's teaching physically, and there's a student attending virtually. But इसमें option ये है, because
जो हमारे हायर क्लासेस होती हैं, लाइक आप एसएटी स्टडी अब्रॉड आईपीएम में हमको ज्वाइन करते हैं, वहां पे हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप फिजिकली आए या आप ऑनलाइन भी आए। लेकिन जो ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, इनमें अभी मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है, वो लोग उस सिस्टम को अब्यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी मेक इट कंपलसरी कि आप या तो फिजिकल ज्वाइन करिए या आप ऑनलाइन ज्वाइन। नहीं तो मैं उसको होमवर्क देता हूं और उस दिन वो ऑनलाइन चले जाए। So I'm not able to do that. So 10th standard and below students do not have the flexibility of either attending online or ये एक चीज डिसाइड। Probably a switch may happen once in a year. आपकी कोई genuine problem है, किसी को फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो गया, and that's why वो एक महीना ऑनलाइन अटेंड करना चाहता है with a parent permission, but in extreme cases we allow. So अब going back, sir, we can do a stop share and we can go back again to what we were doing. Sure, sir. चलिए, thank you very much. So, sir, I will again take your. Sure, sir. So, like this is the subject flexibility. आप ये कोई भी subject attend कर सकते हो. You can pick online classroom, and I've shown you how it works. Next, moving on further. हमारी टाइमलाइन कैसे रहेगी? तो दिस इज टू गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू की क्लासेस ऑपरेट करेंगे। सो वी विल बिगिन इन मार्च लास्ट या अप्रैल 1st। तो जब अप्रैल में शुरू करेंगे, क्लासेस कब होंगी? क्लासेस अप्रैल, ये 4 टाइमलाइंस हैं, अप्रैल, मई, जून टू नवंबर एंड नवंबर टू फरवरी। तो मैंने 4 मोदी जी की भाषा में बोले तो काल खंडों में उस साल को तोड़ दिया है। अप्रैल एक तरह से बिहेव करेगा, मई 4 हफ्ते मई के एक तरह से बिहेव करेंगे, देन जून से नवंबर एक तरह से बिहेव करेंगे, एंड नवंबर से फरवरी एक तरह से बिहेव करेंगे। नाउ अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल में क्लासेस इवनिंग में होंगी 2 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू ज्वाइन, क्लासेस 2 घंटे होंगी। टाइमिंग्स अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या है। अगर आप खारघर में 10 सीबीएसई हो तो 4:15 से 6:15, 10th आईसीएसई हो तो 6:30 से 8:30। फिक्स टाइमिंग्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या सब्जेक्ट्स हैं। संडेज को टेस्ट होंगे। दिस इज हाउ द क्लासेस विल हैपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मई के महीने में क्या होगा? मई के महीने में वो 4 हफ्ते वी विल ऑपरेट फ्रॉम मॉर्निंग 7:30 ऑनवर्ड्स, एंड क्लासेस वुड बी फॉर 4 वीक्स इन मई, सिर्फ 4 हफ्ते। वी विल हैव क्लासेस इन द मॉर्निंग 4 to 6 hours on Sundays. This will be for 10 CBSE, 10th ICSE and 9th ICSE. 9 CBSE will get a 2-week vacation, and उसके बाद they will come for a small summer vacation, 2 weeks. तो ये क्लैरिटी है। जून से नवंबर वी विल गो बैक टू द सेम संडे इवनिंग, जैसा अप्रैल के में था वो पूरा वी विल डू इवनिंग क्लासेस एंड संडे टेस्ट्स, एंड फाइनली आवर एंटायर पोर्शन शुड गेट ओवर बाय नवंबर, एंड देन नो क्लासेस, ओनली मॉक टेस्ट्स। That's how the schedule would be. So this is to give you a rough timeline of this is how the entire operations would be run. Now announcements. UT programs are well adapted to all changes as announced. Now मेरी 25 साल की लाइफ में एक्सपीरियंस में मेरे को बहुत बार ऐसे अनुभव आए कि जब सीबीएसई ने बहुत सारे मेजर चेंजेस करे। जब मैंने 1998 में काम चालू करा था, उसी साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी 99 में, और तब पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, दैट एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके फेमस, क्या नाम है, मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी जी ने मेजर रिवैम्प्स कर दिए थे सीबीएसई। तो हमने काम शुरू करते से ही इवेंट अंदर मेजर रिवैम्प। सो ये सीख गए हैं, सिखा दिया है, अनुभव करवा दिया है। देन 2004 में जैसे ही सरकार बदली, वापस द बिगेस्ट इस सीबीएसई को सारे जन अटैक करते हैं। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले वापस वो सारे चेंजेस अंडू कर। 2009 में कपिल सिब्बल आए, उन्होंने सीसी स्कीम लेके आए और पूरा उथल पुथल कर दिया। फिर 2014 में मोदी जी बने, उन्होंने वो सीसी स्कीम को वापस खत्म कर दिया। अब
ये 2019 से ये चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। क्या चेंजेस? दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट एनईपी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन कोविड आ गया था, इसकी वजह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। दे आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स। अब चूंकि उनको लग रहा है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, सो वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दिस टू बी अनाउंस्ड दिस ईयर। आपके बैच से अनाउंस होंगे। अब उसका मैं एक एक करके मेरा व्यू उसमें बता देता हूँ, और न्यू सिलेबस। अब ये तीन चीज है जो होने वाली है। अब फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई विल टेल यू कि आपका इसमें कौन कैसे अफेक्ट होगा। सबसे पहले, और एक और है जो मैंने इधर नहीं लिखा, इज द न्यू गाइडलाइंस ऑन कोचिंग क्लासेस। 4 चीजें आई हैं, तो वो चारों चीजों के बारे में मैं क्विकली बोलूं। सबसे पहले एनईपी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी सपोज टू बी लागू होनी थी 2019 में, कोविड आ गया करके नहीं लागू हुई, बट अब जो लागू होगी, दिस विल नॉट अफेक्ट योर बैच। बैच मतलब कौन सा? करंट स्टूडेंट्स हु आर इन 10th स्टैंडर्ड विल नॉट बी अफेक्टेड, बट द 9 स्टूडेंट्स में हो जाएगा लागू। अब उसमें लागू होने में व्हाट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? इट डजंट से बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, बट द ओनली सेज इज यू विल हैव ग्रेटर ऑप्शन टू चूज सब्जेक्ट्स। आप 9th स्टैंडर्ड में कंपलसरी नहीं है कि आपको मैथ्स चूज करना ही करना। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो एंड यू वांट टू ड्रॉप मैथमेटिक्स, you could drop mathematics in 10th and you could pick a home science subject, you could pick up a design subject, you could pick up an auto mechanic ka subject and get a 10th standard certificate based on that. So NEP policy, it does not affect agar aap engineering karna chahte, agar aap medical karna chahte, अगर आप कॉमर्स करना चाहते हो, आपका रूट अफेक्ट नहीं हो रहा है एनईपी। लेकिन आप ट्रेडिशनल रूट से नहीं जाना चाहते हो, तो एनईपी आपको ऑप्शन देता है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स 10वीं तक करने की। दैट इज द एनईपी पॉलिसी। लेट मी स्पीक आउट 2 minutes and then we'll open the house for question answers once Manish sir finishes, and you can keep your questions ready for me. Next, multiple board exams. Multiple board exams का आज सर्कुलर अनाउंस हुआ है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द पीपीटी, तो अनाउंस हुआ है। तो यू विल हैव मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स। तो जो करंट 10th स्टैंडर्ड बैच है, उसमें नवंबर में एक बोर्ड एग्जाम होगा एंड मार्च में वापस सेकंड बोर्ड एग्जाम। आर वी रेडी फॉर इट? यस, वी आर रेडी। वी ऑलरेडी कंप्लीट द पोर्शन और हम उसके लिए तैयार हैं। दैट्स व्हाई नो समर वेकेशन कंपल्सरी। सो क्या हम पोर्शन टाइम पे खत्म करेंगे? यस, हम अभी भी अक्टूबर में पोर्शन खत्म करते हैं। हम और जल्दी 15 दिन जल्दी पोर्शन खत्म करेंगे एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जाम्स। सो ये करंट 10th के लिए लागू है। Are we ready for it? Yes, we are ready. Next, new syllabus. They have brought in a new, वो जो इसरो के चीफ हैं, कौन है, सोमनाथ सर, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में there is a new curriculum framework which is being designed. तो बुक्स चेंज होंगी, लेकिन 10th स्टैंडर्ड की बुक्स चेंज नहीं होंगी। You will go with the old syllabus. 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बुक्स चेंज होंगी, उनका नया सिलेबस अप्रैल में अनाउंस होगा। So this how, and we at UT will obviously make changes. क्या हमको आदत है, जैसे मैंने कहा, जब भी सरकार बदली है, हमने हर साल ये चीजें हैंडल करी है। Our team knows how to handle and we'll be well to do it. Finally, last जो पॉलिसी गाइडलाइंस आई है, उसके ऊपर our take on policy guidelines is education is a concurrent matter. Concurrent मतलब सेंटर यूनिलैटरली उसके ऊपर कोई डिसीजन ले नहीं सकता। बच्चों सब, अगर आप सोशल स्टडीज की, पॉलिटिकल साइंस की क्लास अटेंड करते हो 10th स्टैंडर्ड की, तो उसमें ये है एजुकेशन कौन सा मैटर है? इट्स अ कॉन्करेंट मैटर, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की सहमति चाहिए। तो ये जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस सिर्फ सेंटर डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये जो सारी गाइडलाइंस है, इनको इंप्लीमेंट होने में अभी तो नहीं हो रही इंप्लीमेंट। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट लोकली। सो नथिंग विल हैपन दिस ईयर बिकॉज़ दीज आर ओनली डायरेक्टिव गाइडलाइंस, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल गाइडलाइंस। सो नथिंग इज हैपनिंग दिस ईयर। वो कुछ भी होगा तो वो अगले साल होएगा। महाराष्ट्र में इलेक्शंस आर हैपनिंग ओनली नाउ, सो नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। सो ये मेरा 4 टेक हो गया ऑन दीज अनाउंसमेंट्स। नाउ आई थिंक आई विल ब्रिंग इन माय कलीग Manish sir and he will take it from here. Sir, it's all yours from now. Right, sir. Thank you. Thank you for that part of our session today, sir. So I'll take you through quickly to what we have to talk about with respect to this session.
So this is something that we do at UT, and we say that more than a coaching class, we are career makers. We make careers. So ये जो आपका सेशन अप्रैल से चालू हो रहा है, जो अनुभव सर ने बताया, so we make careers में what are other benefits that you get along with classroom coaching is what I'm going to present to you. So the whole idea around UT coaching program is that we bundle a lot of benefits for you so that you're not only doing your board preparation, you're not only doing your subject preparations, but you're also preparing yourself for career to come. So the idea is that we help you check your potential. We give you a lot of choices in terms of exams that you want to write, in terms of careers that you want to pursue. We ensure that you do your board exams very well because they are very, very important. 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के मार्क्स कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो आपके सीवीज पे हमेशा बने रहते हैं एंड योर पेरेंट्स कैन टेस्टिफाई इट यू नो वॉट एवर यू डू इन लाइफ 10th एंड 12th के मार्क्स आपकी सीवी पे हमेशा रहेंगे you're prepared by best faculty so that you achieve the success. So we say that we are career makers. Generally, when we say we are career makers, we cater to 4 years of your academic career, starting from 9th and going up till your 12th standard. हम 4 सालों के लिए आपके programs बनाते हैं. You may have enrolled for 1 year program or a couple of year program या 1 साल के लिए admission लिया होगा. So here is the story of a girl, just like all the students who are seated here. आज से 4-5 साल पहले वो भी इसी तरह से यूटी के क्लासरूम में थी. तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी है. Let me play this story to you, and then I'll try and link things to the story and her journey at UT. Let's hear her out. This is, what we say when we say what we mean when we say we make careers. So जब आप हमको ज्वाइन करते हैं तो आप हमको एक कोई बोर्ड या स्कूल प्रिपरेशन के लिए ही केवल ज्वाइन नहीं करते हैं. It's the entire range of services that we offer, where we help kid with school studies, we help kid with career counseling, जिसको हम discover बोलते हैं. We help you with lot of foundation steps जो अनुभव सर समझा रहे थे, that IIT and medical programs that we started doing now, and then we help you with your professional, which is beyond 10th, 11th, 12th studies and exam preparations. So this is the entire journey at UT that we do, and it has these 4 parts. ये 4 इसके pillar हैं.
school wala is something that was explained by Anubhav sir, and when he said that you have joined the most powerful program and you have got the most effective program where we help you with your school studies, we help you with your career counselings, and we help you with your post 10th studies. The second thing is career counseling, which is called Disha. There are some of the parents, as I can see and I can recall, आप में से कुछ लोगों ने ये career counseling program हमारे साथ already लिया है. This will again be offered to you after your school and board exams, and you can again go in for career counseling in case you have not done. Where we do a 360-degree kind of program with students and parents. We do a lot of pre-counseling sessions with experts. We do psychometric testing around intelligence, aptitude, interest, and personality of the child, and you get a detailed project report where careers are mapped and your suggested careers along with the entire path. So that's what we do. इसके बारे में हम और आपसे बात करेंगे. But this is something that we do at Universal Tutorials for our 9th and 10th students. This is an add-on service which you will have to pay a small amount and avail this in case you are interested. We will send you details and we'll talk to you about this at a later point of time. Now, this is something called as a booster program. So let's say your goal is to get into IIT or medical or engineering, or your goal could be management after 12th, or it could be law after 12th, or you may want to go and study abroad after 12th. Depending upon that, we offer various booster programs. For your IIT engineering medical or any aptitude test that you want to write, we offer program called as foundation programs in maths and science for various foundation and Olympiad exams, talent search exams that happen in 9th and 10th standard. हम आपकी उसमें maths और science aptitude पे काम करते हैं. The programs are designed in a seamless way where along with your school studies, आप foundation programs में भी enroll करके आप maths और science foundation exams like INMO, RMO, NSO, NSTSC and various programs, maths, physics, chemistry, bio, जितने भी exams होते हैं, इनको आप लिख सकते हैं. They help you build your profile. They help you get that starting heads up from your competitor. अगर आगे जाके आपको Indian competitive exams लिखना है, तो ये सारे programs आप school के साथ कर सकते हैं without any clash in timetable. You'll have to, of course, spend some extra hours, but it is designed in a way where you can manage your school and you can manage all of these foundation exam preparation in a seamless way, all under UT roof. UT classrooms में ये सारे programs deliver होते हैं. In case you want to go and study abroad, so at 9th and 10th level, you can do some preliminary SAT preparation, PSAT बोलते हैं, जो एक एग्जाम लगता है स्टडी अब्रॉड के लिए. आप उसके बेसिक फाउंडेशन स्किल्स को अक्वायर कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोफाइल बिल्डिंग. हमारे साथ बच्चे 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग, where they do a lot of activities and we help them and advise them on activities which will help them with foreign university application. So these are a couple of things that you can do in your 9th, 10th. We call them booster, which helps you take a heads up from your peers so that आगे जाके आपका वो जो ट्रांजिशन होगा 11th, 12th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो स्मूथ हो. So we have been doing this for last 25 years. Rishima Sinha, जो आपने अभी केस स्टडी देखी, she is an example of this 4-year journey at UT where she has been part of all such programs. So this is something that we have been doing at UT. How are we doing this? So booster program, foundation program लेने के दो तरीके हैं. You can opt for it, or you can do a screener test at UT. It is happening on 14th April, and you can check your potential. ये एक छोटा सा screener test होगा on math, science, and English. Syllabus would be up to 8th grade level. ये एक आपको screener test देना है. This is a paper-based test for 60 minutes, 60 to 90 minutes का एक test है with negative marking, of course. You will get result on 17th April, your individual report. And basis this report, we will advise you whether should you enroll for foundation program at UT or not. And in case then you are interested, foundation की classes starts from 22nd April. Classes go from May to October. जैसे आपके school के programs चल रहे हैं उसके साथ ही चलेंगे. You will have some additional slots and days where these classes
would take place. तो जैसा अभी सर ने बताया था, in case you are already enrolled in foundation program at UT, your class start date is from 22nd April. If you are not enrolled, but you want to understand and check your potential before you want to enroll, is it really good for you to go into foundation, या आपको भी सिर्फ बोर्ड फोकस करना चाहिए और ये सब बाद में देखेंगे? उसके लिए you can write this screener test. It is free of cost for UT students. 14th April is a Sunday. आपको UT सेंटर पे आना है और एक ये 60 to 80 मिनट्स का मैथ साइंस इंग्लिश का एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना है. Skills required is till 8th standard of your math science. So this is how it will happen. In case you're interested, you could write this test, check your potential, enroll with us, and we start classes from 22nd April. चलिए आगे चलते हैं. In 11th and 12th, what is that we do? So we do various programs in 11th and 12th. ये मैं सब आपको एक साथ बता देता हूँ. So we do a lot of science-based program, IIT, JEE, NEET, integrated school integrated programs हम run करते हैं, जिसमें हम आपको IIT, JEE या medical entrance exam की तैयारी करवाते हैं with CBSE and state board integration. We do commerce coaching for 11th and 12th CBSE. We do CA, CMA foundation courses. Study abroad, it's a very strong vertical at UT where we do SAT preparation. And we do university applications for US, Canada, UK, Australia, Singapore. So these are various countries that we do. And we do some Indian aptitude-based entrance exam preparation. आपको management entrance देना है. You want to write CLAT. So we do these two management and law entrance exam preparation for 11th and 12th class student. यहाँ पे आप 11th या 12th में you can prepare with us for these entrance exams for your higher studies after 12th. So this is our professional division. This is what we do. So basically, ये जो हम we make careers बोल रहे हैं उस पे there's a small video. Let me play this video to sum it. Whatever I have said, you could see it in this video. I'll play this small video. Now, towards the last part, and then we'll go into question answer session. So some of our recent results. These are our board results for, sorry. So this is the board result for 2023. I'm sorry, the screen gets switched. So Vyom, just give me a second and we'll take a question. So 10th ICSE, we have got All India rank 3 with Kushagra and Stuti, 10 CBSE. So these are all toppers at UT, and the entire result pamphlet is available in case you want to see that. So Utkarsh Kothari, 12 CBSE, Kavya Jairam, she got 96.8, and 10 CBSE, Soumya Sinha from DPS Nerul with 96.8. So these are toppers at UT in various segments: 10th ICSE, 10 CBSE, 12 CBSE Science, and 12 CBSE Commerce. Kavya Jairam, again an Ivy League admit coming from Navi Mumbai, and Kavya is she has gone to Cornell University this year, and she's in her first year School of Engineering. So Kavya वहाँ गई है. Again, she's part of our 4-year program where she has prepared with us.
ये हमारे दूसरे स्टडी अब्रॉड के एडमिट्स हैं, स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड, कॉर्नेल, पर्ड्यू, and you look at various countries that we have: Canada, UK, doing computer engineering, mathematics, physics, and various courses. This is our IIT JEE division's result, the program that we run in association with Champions. We call it UT Champions program. This is being run at Kharghar and Vashi branch of UT. So you have Agam Kasniwal with All India rank 61 and Parijat Mukherjee All India rank 96 in JEE Advance. So this is all advanced results, जिससे आपको entry मिलता है into the IIT. So these two have been the toppers. ये JEE Mains के result हैं 2023 के, where you will see that students have done phenomenally well and they've scored a very, very high percentile. These are commerce division result. ये commerce में 12 CBSE and CA foundation के कुछ result. So these are some of the courses, like I said, we do after 10th, जो मैंने आपको पहले भी एक slide में दिखाया था. So I'll not take a lot of time here. Thank you for attending this session. I think we can now go into the question and answer session. Anubhav sir, I will stop share and then we can take some questions from online and some from classroom. Thank you. Thank you very much, parents. So, sir, let me just get the view correct over here. Yeah. So I think we will first start with physical questions and take about 2 questions from physical section and then go for the online. We'll go alternatively 2 questions and 2 questions. Okay. So let's go with the physical. To any questions? Yes. Okay. Okay. We've taken admission in Vashi. So my problem is that we did not have much confidence in open Quranic class because there's a rumor going on that faculties are not available there, or that particular class is gonna shut down due to some redevelopment work or something. So the idea is we would be more comfortable enrolling him in open Quranic section. So I want to understand this. How do you ensure whether which class quality is better? Because we were told that Vashi is better than Kobar Kirane. So I would still want to put him into Kobar Kirane where it's just 2 minutes more. So I think there are 2 questions. One is quality at Kobar Kirane and second the redevelopment at Kobar Kirane. So let me answer that question in that way. First, quality at Kobar Kirane. तो मेरे लिए साहब ये जैसे एक माँ के लिए बच्चे होते हैं, मेरे वो सारे एक बच्चे. So quality is not really different. And how we work is, sir, we have maths faculty. We have 2 faculties per branch. Like Viju sir would service Kharghar and Nerul. Then we have 1 professor serving Chandpada Vashi, 1 professor serving Airoli, Koper Kirane, in terms of maths. But science, social, English, Hindi, there is 1 set of professors who are serving all our branches. So udhar koi faculty alag-alag nahi hai. So faculty या quality में कोई फर्क नहीं आएगा. That is a guarantee from my side. That's the first part of the question. Second part, वो जो redevelopment वाली बात है, that is beyond us. Yes, there is a talk going on redevelopment. लेकिन वो बात redevelopment की पिछले 6 साल से चली. तो अब वो redevelopment जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, अब वहां के जो सेक्रेटरी साहब हैं, अगर वो मोदी जी जैसे बन गए और कल redevelopment कर दें, लेकिन he is the same secretary जो 6 साल से हैं. So I don't see that as a very big issue, but yes, it's a real issue. अब because the talks have got heated up, so इसकी वजह से वो heat up हो गई हैं. So there is a possibility that that might happen, but in any case, Vashi will be on, and अगर हमारा कोपर खेरने होगा तो we may look for an alternate place at कोपर खेरने, but Vashi is definitely on. Vashi is our, again, कोपर खेरने is also my center, but that is beyond me. कि वो redevelopment में जाएंगे. That's my answer to that question. So redevelopment की talks, I think we will know in a month's time, and we will take a call in that कि वो हो रही है या नहीं हो रही है. हम आपको अदर में नहीं लटकाएंगे. हम आपको मैसेज भेज देंगे कि वो redevelopment में जाएगी, तो mid year में शायद आपको चेंज नहीं करवाएंगे.
आपको before the year itself we will communicate. But that view we will take in the month of February. One more question from physical. Okay, online questions. Mr. Sir, Vyom. if, sir, excuse me. One sec. There's Mr. Vyom who's raised hands. पहले उनका question लेते हैं. Then you please raise hand and then ask a question. Yes, Mr. Vyom Valenchkar, please ask a question. Thank you so much, sir. I was just wondering if it is possible that you also facilitate psychometric tests after 10th before they get actioned into 11th and 12th. Sir, I would take that answer, Manish sir. Sure, sir. Mr. Valenchkar, that is something which is up to you. That's an additional product which is called as Disha. You could do it at any point of time in your career. We recommend that you do it in grade 9th and grade 10th. So if you would like to do it immediately after 10th, you could do it after 10th. That's up to you to decide. But मैं आपकी जगह अगर होऊंगा and professionally मैं advise करूंगा तो मैं कहूंगा उसका ideal time is 10th में जब बच्चा घुसता है and 10th के July is the ideal time to start thinking about that. So you should do it at that point of time and we will come to your classrooms and हम आपको बीच में जुलाई के महीने में address भी करेंगे and we will run the Disha program at that point of time. But however, you could choose it at any point of time in your career. Noted, sir. Thank you. Just one request I would have is if you can also send up a follow-up email regarding that because बच्चे class में होते नहीं होते हैं तो Every time emailer will always be coming. Communication will happen on WhatsApp. Communication will happen on email and SMS. These are the three modes of communication. जैसे इस pre-welcome में you must have received an email also. This is how communication will happen from us. Much appreciated, sir. Thank you so much. Aditi Neb, you can go ahead with your question. Sir, just wanted to ask about the Koperkhedne branch. If at all, as you said, if at all there is redevelopment for the building, then would the class be shifted to somewhere else? So as I answered, Vashi is always an option. Now somewhere else, that announcement we'll do it in the month of February. We will not disturb you during the year. If we know that redevelopment is imminent and it may happen in July, August, September, then we would not start a batch and we would start a batch only at Vashi and we would make that announcement in the month of February. Because from my place, Vashi is far away. I cannot send my daughter so far. So that was my concern. So ma'am, you will know that in the month of February for you to decide what is happening. As I said, redevelopment is something जो 6 साल से चल रहा है. मालूम पड़ेगा इस साल भी अगर हमको लग रहा है कि वो सिर्फ बातें ही चल रही है and they are fighting with each other and वो नहीं होने वाला है तो जैसे हमने last year वो call किसी parent को disturb नहीं करा था तो हम आपको शायद नहीं disturb करें. Okay, one more thing wanted to ask sir about this board exams happening twice a year. So this will be implemented right from this year, correct? Mrs. Neb, ये information बहुत ताजी information है. आज सुबह जब मैं सुबह उठा तो मैंने NDTV पे और सब जगह ये news headlines पढ़ी. So I am also as much aware जितना आपको मालूम है. मेरी भी source of information is only media. बहुत ज़्यादा information नहीं है. लेकिन चूंकि मेरा ये I was expecting a question आज मेरे से parents पूछेंगे. So I am pretty well read on this. And I have read the Ministry of Education का circular वगैरह पढ़ के आया हूँ तो उनमें I have read lines कि this would be implemented for the existing 10th standard from this year itself. So existing 10th standard only CBSE. ICSE is not coming part of this. ICSE is a different independent body. They may choose to announce it. They may not choose to announce it. तो ये जो आज जो announcement आया है जैसे मैंने बोला education is a concurrent subject, so it is only central government जिसके अंदर अधीन CBSE आता है. तो ये जितने ministers हैं ये सिर्फ CBSE को control कर सकते हैं. तो ये सिर्फ CBSE के बारे में बोल रहे हैं. तो CBSE का जो education minister है उन्होंने आज announce करा है कि इस current year में जो बच्चे हैं उनके लिए 2 exams होंगे. एक एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, दूसरा एग्जाम फरवरी मार्च में.
This is the announcement. So then would the syllabus be divided into, I mean, any information on that? How would it go? No working details have been released, but my Okay. hunch is there will be no change in syllabus. Full syllabus aayega is my hunch. My colleague Manish would like to add on that. Sir, please go Yeah, ahead. sir, I'll just add to what you have just said. So the first such batch would be 2025 passing batch, which means student who have entered 10th in 2024 CBSE, उसमें होगा. It is a full syllabus thing, and the November attempt is an optional attempt. If you want to write it, you write it. Because the circular says the idea, the primary objective is to reduce the stress. तो फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर का उन्होंने ऑप्शनल बोला है उसमें, इन केस स्टूडेंट राइट्स नवंबर डजंट डू वेल, मार्च में अच्छा करता है तो मार्च वाला स्कोर आ जाएगा. नवंबर नहीं लिखता है तो जो भी मार्च का स्कोर है उसको काउंट कर लेंगे. नवंबर बहुत अच्छा चला गया, उसको मार्च नहीं लिखना है तो मत लिखो. दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट. November wala is optional. If you don't want to write, don't write it. And the idea is to reduce stress. This is what I know, sir. So November also full syllabus will be there, and March, so anyways it is full syllabus. Yes. Okay. Thanks a lot, sir. Any other questions in the online? We will wait for one more question and then we'll shift to physical. So there's no hand raised here. You can take a physical question. Yes, physical, there's one more question, please. So there's a new policy which says that English children below 16 cannot be admitted into coaching classes. Does that apply to us? So, as I said, sir, education is a concurrent matter. ये मॉडल गाइडलाइंस हैं. अब इसके लिए जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक रूलिंग नहीं बनाती है और लॉ नहीं इनेक्ट करती है, ये it will not be enforced. I am not expecting this to be enforced in this current year. So as of now, I don't see that as a policy. It's a guideline. It will remain as a directive guide. More question. मेरी बेटी तो गौरी नेहरू में पढ़ी आपकी क्लासेस. आप लोगों ने नवंबर में खत्म कर दिए. एक्चुअली मैंने वहां पर प्रमिला मैम ने हमको भी ये चीज बताई थी. नवंबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद आपका खाली 2 चलता है, ट्यूसडे और थर्सडे. NEPS और SEP? यस, ट्यूसडे और थर्सडे चलता है. अभी बाकी का जो डे होता है, उस डे में ना कुछ नहीं करना है, टाइम पास करना है. उसके लिए कुछ This is for 9 CBSE. यस. हाँ, तो मैडम 10 CBSE में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी. 10 CBSE में अब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे. एक्चुअली उसके पीछे रीजन बता रही हूँ. हाँ, मैं आपको I do understand. तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक्शन किया है कि 9 CBSE को वेकेशन दिया है, उनका पोर्शन जल्दी नहीं करेंगे. 10 CBSE में क्या हुआ है, आपका एक यूनिक केस है, which I am saying 9 CBSE, let me just complete. 9 CBSE has been a unique case, जहाँ पे 9 CBSE को कोविड में उन्होंने बहुत ज्यादा पोर्शन रिड्यूस कर. So this is something which is not some other design issue नहीं, मतलब this was not handled at the design level. जब हम पिछले साल गए, उसके बाद 9 CBSE में करीब 40% पोर्शन रिडक्शन. तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है. अब उसको इस साल 10 स्टैंडर्ड में वो पोर्शन रिडक्शन नहीं है. सो जब आपकी बच्ची, आपके लिए पहले मैं बताऊं, आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी. इनफैक्ट आप मेरे को बोलेंगे अनुभव सर पोर्शन जल्दी खत्म करो, बिकॉज नवंबर में एक पहला बोर्ड होएगा और मार्च में सेकेंड बोर्ड होएगा. सो आपको अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी. आपसे जो जूनियर बैच है 9th का, उनको प्रॉब्लम नहीं आए करके वी मेड सम डिजाइन चेंजेस. आपने देखा होगा देयर विल बी 9th स्टैंडर्ड गोइंग ऑन अ समर वेकेशन. समर वेकेशन में दे आर नॉट गोइंग टू हैव क्लासेस फॉर 6 आवर्स. द प्रेजेंट 9th जो आपसे जूनियर 9th आएगा, वो डिजाइन चेंजेस हो गए हैं. प्लस दे विल नॉट हैव क्लासेस फॉर 4 वीक्स में से उनकी 2 ही वीक क्लासेस होंगी, और वो 2 वीक भी उनकी 6 घंटे क्लास नहीं होगी, उनकी 3 ही घंटे क्लास. सो दैट पोर्शन वुड हैपन बाय द नवंबर दिसंबर तक चलेगा फॉर योर जूनियर 9th स्टैंडर्ड. मुझे आपके प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने वो सब देखा है. अभी 9th में मेरी बेटी है, मैंने उसको देखा है किस तरह से उसने पिकअप लिया है, क्या लिया है. अभी 8th में उसका 91% मार्क्स. ओके, अभी फर्स्ट एग्जाम जब हुआ अच्छे मार्क्स मिले, सेकेंड एग्जाम में भी उसको ठीक मिले, लेकिन अभी जब किसी पोर्शन खत्म हो गया है तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर में बैठे हैं तो ये नहीं कर पा रहे. मेरा इतना ही कहना है, मैंने प्रमिला मैम को भी बोला था कि सर को बोलो कि जो बच्चे घर में बैठे खाली 2
ट्यूसडे और थर्सडे जो आ रहे हैं उनको वो लोग घर में ट्यूसडे थर्सडे में बच्चों को है ना होमवर्क दे कि वो घर में ये प्रिपरेशन करके आए। और सेकंड थिंग है कि जो आपका टेस्ट है वो कंपलसरी नहीं है, आप कब भी आकर जाकर लिख सकते हैं। ये जो इश्यू है ना इससे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्ची अभी अभी मॉक टेस्ट हुआ, मेरी बच्ची ने सिर्फ 2 ही पेपर लिखे, जबकि मैंने उसको कंपलसरी बोला था कि तुझे सारे पेपर लिखने। जनवरी में 2 मॉक टेस्ट थे, उसने सिर्फ 2 ही पेपर लिखे। अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट तो अभी आने वाला है। तो इस चीज को आप कंपलसरी करिए कि आप आ जाके कभी भी नहीं, आपको करना है। बिकॉज क्या होता है मन में, इसकी वजह से पेरेंट्स क्या बोलते हैं, चल कभी भी लिखना है ना 2 दिन बाद जाके लिखना। सर क्यों मालूम है, बच्चे ना नहीं कर रहे। मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी के साथ जो 2 बच्चे हैं ना स्टूडेंट डीएवी के ही है, वो भी सेम इसमें जा रहे हैं। मैडम आई थिंक ये एक 9 सीबीएसई में इस बार ये इशू आया था, इसको हम लोग अब हैंडल कर रहे हैं। वी आर हैंडलिंग इट इन मल्टीपल वेज। 10th में आपको ये इशू प्राइमरीली नहीं आएगा क्योंकि पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं आएगा इशू। और इसका जो आपने जो बोला, ये आई थिंक वी नीड सेपरेटली एंड डिस्कस। इसमें हम पेरेंट्स को एम्पावर करते हैं। अब गॉन आर दी डेज, आज से 25 साल पहले जब बच्चे क्लास में रहते थे तो मैंने शुरू में बच्चों को, जैसे हमको हमारी टीचर ने थप्पड़ मारा है तो हमने भी थप्पड़ मारे हैं, लेकिन आज मैं वो वाला डिसिप्लिन नहीं कर सकता हूँ। इट इज मोर ऑफ एन एम्पावरिंग डिसीजन। आप हमारी रिपोर्ट्स देखेंगे तो उस रिपोर्ट्स में हम बहुत ट्रांसपेरेंटली आपके साथ हर बार शेयर कर रहे हैं कि आपके इतने टेस्ट हैं, आपकी बच्ची ने इतने टेस्ट नहीं लिखे, प्लस वी आर सेइंग रिमेनिंग इतने बच्चों ने इतने टेस्ट लिखे हैं एंड दे आर गेटिंग दीज मार्क्स। सो आई थिंक वो तो मैं नहीं उसमें कर पाऊंगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल। बट पोर्शन का वी आर ब्रिंगिंग इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ अभ्यास फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। MEPS ACPS के साथ साथ देयर इज एन अभ्यास कॉन्सेप्ट व्हिच इज ब्रॉट इन। जो आपने बोला होमवर्क का, तो उसका हिंदी का नाम अभ्यास, देयर विल बी टीचर्स गिविंग अभ्यास एंड देन इट विल बी करेक्टेड। वो हम लेके आ रहे हैं अगले साल। One more physical question. Sir, about this board exams. In November में half yearly exam हो रहा था in March, right? नहीं, स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम will now happen in September. September. And then board का final exam will happen in November. But it is divided in 2 parts. No, it will not be divided in 2 parts. Full syllabus. Full syllabus. पूरा साल का syllabus will happen in November. Okay. And in March. वापस full syllabus. Second option. Okay. So there will be, children will be writing. स्कूल में एक पार्शियल पोर्शन का एग्जाम, प्रॉबेबली स्कूल उससे पहले प्रीलिम भी ले लो। तो स्कूल में शायद अक्टूबर में एक प्रीलिम होएगा, देन नवंबर दिसंबर में एक फुल एग्जाम होएगा एंड देन मार्च में वापस फुल एग्जाम। हाँ, बट इज दिस ऑप्शनल एग्जाम? All of these are optional. सर नवंबर एंड मार्च का बेस्ट स्कोर गिना जाएगा, जिसमें भी आपका बेस्ट आएगा वो काउंट किया जाएगा। जरूरी नहीं है नवंबर लिखना है, नवंबर यू स्किप ऑल्सो। Sir, can you just elaborate a bit about the test series? Only test series where the students don't take the regular syllabus and they are only for the test series. तो वो कैसे होता है? पूरा क्वेश्चन आएगा। So test series is an option which is primarily designed for students. So the question has come for test series. Test series is an option primarily designed 3 तरह के बच्चे जो काफी इंटेलिजेंट हैं और वो कहते हैं हमको कोई एडिशनल कोचिंग की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पढ़ेंगे। दूसरे ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप कहते हैं कि यार तेरे को मैथ्स में पढ़ा दूंगा, या तेरे को हिंदी में पढ़ा दूंगा, तेरे को इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, लेकिन यार ना तू ये मत बोलना अब तेरा टेस्ट भी मैं चेक बना लूं और लिख के दे दूं, वो मेरे बस की बात नहीं है, मेरा ऑफिस है रोज। तीसरा, यू गो टू अ ट्यूशन टीचर। ट्यूशन टीचर अच्छी है लेकिन ट्यूशन टीचर हमारे जैसी स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि रेगुलर टेस्ट ले पाता है। वो ट्यूशन टीचर पढ़ा देता है लेकिन ट्यूशन टीचर टेस्ट नहीं ले पाता। तो ऐसे 3 बच्चों के लिए वी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट कॉल्ड टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में व्हाट वी डू इज वी डिवाइड द सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स, एक चैप्टर टेस्ट एंड मॉक फुल पोर्शन टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में जैसे मैथ्स में 15 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर का एक टेस्ट बना दिया, वो आधे पौने घंटे का टेस्ट होगा, उस चैप्टर पे वो सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे आपको एक पूरा 15 चैप्टर का स्केड्यूल दे दिया। स्केड्यूल मानो बस टेस्ट बना दिए एंड वी ओपन द टेस्ट फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स। अब आपकी मर्जी है, आपने उस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री मई में पढ़ा दी। ट्रिग्नोमेट्री पहला चैप्टर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री 5वां चैप्टर। तो आप मई के संडे को आके बोलते हो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लिखना, मैं बोलूंगा आके लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट, और आप लिखोगे, मैं आपको पेपर दे दूंगा
एंड मैं करेक्ट करके आपको दे दूंगा, यू विल गेट अ मॉडल आंसर। अब इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री लिखा है इस मई में, इन्होंने रियल नंबर्स लिखा। अब आप रियल नंबर शायद जून में लिख रहे हो, ये ट्रिग्नोमेट्री शायद जून में लिख। नाउ विल दे गेट दी सेम पेपर? नहीं, हम 3 सेट्स बनाते हैं तो हर बच्चे को अलग अलग सेट्स मिलते हैं, प्लस इट्स अ बोर्ड एग्जाम, इज एन एग्जाम ऑफ द नोन। अगर सवाल रिपीट भी होते हैं तो दी आइडिया इज कि तुमने हमारे सामने बैठ के लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टाइम के अनुसार वो टेस्ट लिख लीजिए। आप बोलते नहीं अनुभव सर मेरे को ना उसको यूटी सेंटर भी नहीं भेजना, मैं तो ऑनलाइन में ही करूंगा, मेरा बच्चा बहुत सिंसियर है, मेरे सामने करता है, तो आप हमारे उड़ान के पोर्टल पे चले जाइए, उड़ान के पोर्टल पे वो टेस्ट ऑन कर लीजिए, आधा घंटा डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, 1 घंटा, एंड टेस्ट वहीं पे लिख लीजिए, फिर टेस्ट पेपर अपलोड कर दीजिए, मेरा टीचर यहाँ पे ऑनलाइन ही नोटेट करके करेक्ट करके आपको आंसर भेज देगा, और आपको उसका मॉडल आंसर मिल जाएगा। यू वुड नो कि आपने क्या गलती करी, एंड वी विल गिव यू अ कमेंट कि आपका बच्चा इसमें वीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग, तो आप उसको इंप्रूव कर सकते। प्लस आपको हम नवी मुंबई की परसेंटाइल रैंकिंग दे देंगे कि भाई हमारे 2000 बच्चों में आपका बच्चा 50 परसेंटाइल पे आता है कि 90 परसेंटाइल पे आता है, तो यू नो वेयर इज ही स्टैंडिंग। तो ऐसे चैप्टर टेस्ट हैं, ये चैप्टर टेस्ट 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक चलते हैं, और उसके बाद नवंबर से फुल पोर्शन टेस्ट चालू होगा, एंड हर एक सब्जेक्ट में 4-4 फुल पोर्शन टेस्ट मिलते हैं। अगेन वो भी आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी ले सकते हैं। हम एक डेट जरूर अनाउंस करते हैं कि इस दिन लेना चाहिए, जैसे मैडम ने बोला, हम एक डेट अनाउंस करते हैं, इस दिन ये टेस्ट खत्म होना चाहिए, इस दिन ये टेस्ट खत्म होना चाहिए। बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो जैसे लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। दिस इज हाउ द टेस्ट इज। यस सर। Thanks for organizing this. So one thing I want to understand is proposals to teachers. Last 1 year, I've seen that my kid has been improving in subjects, but especially in maths, he or she needs to improve much. So just in case I want to meet personally with the professor, understand what is the observation, so I can also work out that. Is there a possibility that we can meet the professor once in a week? So the question is, can the parents meet the professors? So the answer to that question is yes. There are 2 structured opportunities where you can meet the professor. There are 2 PTMs which are conducted in a year, जहाँ पे आप structurally आके मिल सकते हैं। Second, there are doubt solving sessions. Much better because तो मैं बताऊँ 3 opportunities है। One is structured है, PTM है, जहाँ पे आप आके मिल सकते हैं, जैसे स्कूल में होता है, तो आप टीचर से आके मिल सकते हैं, इंडिविजुअली आपको टाइम दिया जाएगा, that is first. Second, every month there is a doubt solving session. Doubt solving sessions happen online, they happen offline. उसमें आप रिक्वेस्ट रेज करिएगे, आपको स्लॉट्स आते हैं और वो स्लॉट बुक करते हैं और फिर 1-on-1 टीचर से मिल सकते हैं। So that happens every 3rd Sunday of the month. It's not offline, this is online only. पूरा जूम पे होता है, तो उधर आप टीचर से इंडिविजुअली उनका 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का स्लॉट बुक कर सकते हैं। That happens every 3rd Sunday of the month. So you can meet the teacher, and that begins from May onwards and goes on up till February. That's the second. Third, you could request an extra lecture for a teacher. कि आपने किसी कारण से मिस कर दिया, that extra lecture can also be requested, and that's again an opportunity where you can meet the teacher. So this is how you can meet the teacher. One more question, and then I'll take online questions. There was a person who had raised hands behind. पूछिए. Yeah. Actually, I had the same. Yeah. पूछिए. If the child is unwell or because कोई class miss हो गया, so I think you already addressed it. That particular lecture, उसके लिए request आना पड़ेगा. Okay, the answer to that question is अगर बच्चा absent हुआ तो क्या ये सब हम formal welcome में मार्च में address करेंगे? आज nitty-gritties में नहीं घुसना चाह रहे, but you have a question, I'll answer. उसके लिए 2 provision. One is all our lectures are YouTube record. जैसे आज का सेशन भी YouTube पे एक लिंक पे रिकॉर्ड हो जाएगा and you can go and attend. So हमारे सारे लेक्चर्स हमारे UT ऑनलाइन के YouTube चैनल पे रिकॉर्डेड हैं। तो फर्स्ट मेथड इज कि आप उस लेक्चर को जाके वॉच कर लीजिए जो आपने मिस कर दिया। सेकंड, आप वो लेक्चर के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर रिक्वेस्ट मांग लीजिए एंड वी विल प्रोवाइड यू। अब एक्स्ट्रा लेक्चर में जनरली ये होता है, टेंडेंसी इज मैं प्रोफेसर हूं, मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर लिया, आप बोलोगे कि यार 1.5 घंटा पढ़ाओ, तो मैं प्रोफेसर बोलूंगा यार तू मेरा लेक्चर देख क्या, और फिर तेरे जो डाउट्स होंगे मैं 15 मिनट आधे घंटे में तेरे डाउट्स क्लियर। This is the approach which is taken for extra lecture, which is a practical approach.
जैसे आपने ये सेशन मिस किया एंड यू टेल मी कि अनुभव सर को रिपीट करो, तो मैं बोलूंगा सर एक बार सेशन देख लीजिए। अच्छा, YouTube अलाउज यू कि आप उसको, अच्छा बच्चे हमसे ज्यादा तेज हैं, वो फॉरवर्ड कर करके मेन चीज पढ़ लेते हैं उसमें से और देख लेते हैं, एंड देन दे कम टू अस एंड दे ओनली कम फॉर डाउट्स। सो YouTube इज एन एक्सीलेंट रिसोर्स। जैसे मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि वो उसको रिविजन के लिए भी अब अपने आप यूज करने लगते हैं कि बिजू सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया या ये नहीं आया, कैसे पढ़ाया था सर ने, याद नहीं है, तो दे गो टू YouTube और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाके वो पढ़ लेते हैं एंड याद करके फिर रिवॉर्ड करते हैं। दैट्स हाउ द YouTube is. Sir, you please take the online question. You can ask your question, please. Hello, sir. Yes, please. Am I go ahead. audible, sir? Yes. Yes. Wanted to ask for this, considering the double boards, like in November, as you said, so the portion in the schools as well as in UT has to be completed before November, right? By October. Yeah. And what about the, because what I believe is from after November, normally the portion gets over by November, and December, January, you have the prelims, right? Yes, Pre-boards. ma'am. Yes. So, considering the November board, when will that pre-boards or all those things happen? Or maybe the test series, the complete test series, like test series for the whole portion. So, madam, if you are asking us about school calendar, so Anubhav sir replied this where he said that in all probability, school would complete their midterms and prelims much before November. Midterm could be sometime in September, and by October they could do one prelim, and other prelims could be after the first attempt of board exams. As far as UT is concerned, we will be completing our syllabus uh, by October month. We will do mocks, at least a couple of rounds of mocks before the first attempt if student is writing. And we'll do 4 more rounds of mock after their first attempt. So there are total 6 rounds of mock in CBSE, 10 CBSE. A student writes 6 times a given subject, math, science and social, English Hindi 4 times. तो इसमें से वो they will write 2 times before their first board and 4 times after their first board. So this is how test series will also work in the same fashion. Okay, sir. Thank you. That's why, ma'am, वो summer vacation में हमने announce करा है. There is no summer vacation. We begin most probably in April, early March. Oh, sorry, mid March we begin, and उसको portion cover up करने के लिए no summer vacation is happening. Okay, sir. Okay, thank you. More questions in the online? Any more questions in physical? So there are multiple questions in physical. We go one by one. हाँ जी. CBSE का जो फाइनल 10th का है, तो ये जो है पेपर चेकिंग सेंट्रलाइज सिस्टम से होता है या कॉलेज स्कूल ही चेक करती है? नहीं, centralized system. सेंट्रलाइज सिस्टम. Papers are conducted at not at your school. आप कौन से स्कूल से हैं? तो DAV will not write it at DAV. शायद आपका बाल भारती सेंटर आएगा या आपका कोई और जगह सेंटर आएगा. तो सबसे पहले तो एग्जाम आप अपने स्कूल में नहीं लिखोगे, नेसेसरली कोई दूसरे सेंटर पे जाके लिखोगे. प्लस पेपर्स विल कम फ्रॉम बोर्ड एग्जाम. आपके स्कूल के पेपर्स नहीं होंगे और दे विल नॉट बी कलेक्टेड हियर. दे विल ऑल गो सेंट्रली एंड दे विल बी कलेक्टेड सेंट्रली. दैट्स इट. More question? Sir, this is about the this calendar. You have shown that for Kalkand, they start from April. So before that, you mentioned about either the batch will start from 17th of March or it will be from 31st of March. So probably you are referring the batch is starting from 31st of March, I believe. Sir, मेरा hunch is because of 2 board exams. Correct. Schools will go for 17th March क्या start date आ जाएगा, and we will start our session from 18th of March. तो मतलब वही ऐसा मेरा hunch है. 2 हफ्ते पहले आ जाएगा. तो वो सारी जो चीजें हैं आपके जो 4 क्वेश्चन थे वो सारे वो बस 2 हफ्ते पहले. More questions? Yes. It's actually not a question, but a request that as again, repeating myself, when we are over here, and the Varshik distance will at least take after 45 minutes of reading.
So if you could just say out something like this. सर ये ना February 15th के पहले आपको क्लैरिटी हमारी तरफ से आ जाएगी कि what we are doing. I am कमर्शियल वालों की मीटिंग हो रही है 24th January की उनकी जो सोसाइटी की है, तो मैं 15 फरवरी तक वो क्लैरिटी आपको सबको दे दूंगा. नहीं वो सर वो क्लैरिटी मैं आपको तब दे दूंगा. Yes. जी. So sir, no more questions in the physical thing and no more questions from the online. We can call done with the session. So Yes, sir. thank you very much for coming in. I hope you got value out of the session. The idea was to give you a peek. Plus आप speculate नहीं करें कि ये जो announcements हो रहे हैं उनसे आप speculate नहीं करें. That's the whole idea of doing this pre-welcome session. Thank you for coming down and seeing हमारे पास यहाँ पे physically आने के लिए. Thank you very much.